Morning students, today we will start with the analysis of the Faraday's law. First we will do the analysis of Faraday's first law. What was Faraday's first law? According to the Faraday's first law of electromagnetic induction, the induced EMF whenever the magnetic flux changes in the circuit and EMF is induced, and the induced EMF is equal to the negative rate of change of magnetic flux through the circuit. Now, first we will do the mathematical analysis. In this we have, if small e is the induced EMF in the circuit, then the value of E is equal to minus, that is negative of delta phi b upon delta t, where delta phi b is a change in the magnetic flux and delta t is the time interval in which that change takes place. Now, अगर जो change है in the magnetic flux is very small, अगर जो change है वो बहुत small है and it occurs in a very small period of time, then E is equal to minus d phi by dt. जो d phi b है वो है very small change in magnetic flux and dt is the corresponding change in the time. Now, if the phi b हमारा क्या है, magnetic flux, the unit of magnetic flux is Weber, the unit of time is second, and the unit of our induced EMF is volt. Now we will do theoretical explanation. अब उसमें क्या है कि जो हमारा induced EMF है, it is equal to negative rate of change of magnetic flux. अब इसमें हम कंसीडर करेंगे, ये हमारा कॉइल है, ये हमारा मैग्नेट है. When they are placed far away, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, that are passing through this coil are small. और अगर हम इसको करते हैं, मूव करते हैं towards, either we move the coil towards the magnet or we move the magnet towards the coil. In that case, the number of magnetic field lines or the magnetic flux through the coil increases, and if we move it away, it decreases. So, with the relative motion of the magnet and the coil, there is change in magnetic flux, और इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण क्या आता है हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट. और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट है, इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम. जो रेट होता है, रेट इज ऑल्सो टाइम. रेट का मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज. So, the induced EMF in the circuit is equal to negative of rate of change of magnetic flux through the circuit. Faraday's first law is also known as Newman's law. Now, in the first law we have studied that whenever there is change in magnetic flux of the coil, our EMF is induced. Now, the EMF induced also depends on the speed of movement. Means if we move the magnet with a larger speed, with a greater speed, then the induced EMF is more. And also अगर हमारा जो magnet है and coil है, they are moving in same direction. Means अगर इस direction में move कर रहा है हमारा coil और इसी direction में हमारा magnet move करे with same velocity, then the induced EMF is zero. Means no EMF is induced in that case. So, this was about the Faraday's first law. Now we will do the analysis of the Faraday's second law. What was Faraday's second law? According to Faraday's second law, the direction of the induced current is such that it opposes the cause which produced it. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी विल कंसिडर द एक्सपेरिमेंट 1 विच वी हैव डन. उसमें हमारे पास क्या था, देयर वाज अ कॉइल, द कॉइल वाज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर एंड वी मूव अ बार मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. अब इसमें क्या होगा, व्हेन यू विल मूव द मैग्नेट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, तो जो नियर एंड है, नियर एंड मीन्स जो कॉइल का एंड मैग्नेट वाली साइड है, दैट इज कॉल्ड द नियर एंड फॉर दिस बार मैग्नेट.
the near end of this coil will act as a north pole. वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा एंड ऑब्वियसली इफ दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, द सेम पोल्स, द लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मींस ये जो मैग्नेट है ये इस डायरेक्शन में मूव करके करंट इंड्यूस कर रहा है और जो नियर एंड ऑफ द कॉइल है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करके उस कॉइल, उस मैग्नेट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द कॉइल. देयरफॉर ये है कॉज दैट इंड्यूसेस द करंट. और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इन दिस, ये डायरेक्शन क्या कर रही है, यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप कर रही है एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ पोल इन दिस साइड इट इज अपोजिंग द कॉज. दिस इज द कॉज and the current is opposing this cause. In the same way, जब हम नॉर्थ पोल को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे अवे फ्रॉम द मैग्नेट, जब हम नॉर्थ पोल को मूव करेंगे तो जो नियर एंड ऑफ द कॉइल है इट विल बी साउथ पोल. अब जब हम मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहे हैं तो जो कॉज है इट इज इन दिस डायरेक्शन अवे फ्रॉम द कॉइल, बट द साउथ पोल इज अट्रैक्टिंग द मैग्नेट. So it is also in the opposite direction of the cause. क्योंकि जो cause है it is towards the left, but due to the direction of induced current यहाँ पे south pole है और direction of the current is towards right. So these are in opposite direction. So whenever there is an induced current in the coil, the induced current की जो direction है it will always be opposite to the cause which produces that current in the coil. Okay students, and the second law of the is also known as Lenz's law. जो first law of electromagnetic induction है it is known as Newton's law, and जो second law है electromagnetic induction का it is known as Lenz's law. So this is the explanation of both the laws. अब आपको समझ आएगा both laws में क्या है electromagnetic induction में and how you can mathematically or either theoretically explain these two laws. Okay students, that's all for today.